नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मॉक टेस्ट 7 यूजीसी नेट जेआरएफ या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए. सो दिस इज मॉक टेस्ट 7 फॉर ऑल दोज एनवायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट JRF or state level eligibility test. So let's begin. Question 1. The scoping process in the EIA process does not involve which of the following steps? A. Baseline description and potential additional data collection needs. Scoping certainly does this. Detailing environmental impacts of a project and creation of a contingency or management plan means creation of a management plan. So environmental management plan is not created during the scoping process. Then C, defining a set of criteria to assess the project. This is also done during the scoping process. Setting of an expert team that will conduct the EIA. This is also done during the scoping process itself. So यही एक है option B, detailing environmental impacts of a project and creation of contingency or management plan. ये scoping के दौरान नहीं किया जाता है. So this is the correct answer. 1 का B. If you want to solve the quiz yourself, you can just mute the video and solve it yourself. Otherwise, you can just go with me. Question 2. A consultancy conducted an environmental risk assessment to evaluate the possible impacts of chemicals released from a factory. The environmental risk assessment should focus on. तो एक कंसल्टेंसी ने एक environmental risk assessment कंडक्ट किया कि एक फैक्ट्री से कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो जो रिस्क असेसमेंट होगा उसको किस चीज पर फोकस करना चाहिए? ए, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री. सर्टेनली नो, क्योंकि यहाँ रिस्क असेसमेंट की बात हो रही है जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं उससे. So certainly not A. Second, legislative requirements related to human health regarding the pollutants emitted. It's important to take note of this, but it should not be, just this should not be the focus कि कैसे भी करके कानून से बच जाए, वो फोकस नहीं होना चाहिए. C, quantification of hazards to the local environment. ये भी important point है और रिस्क असेसमेंट के दौरान इसको भी ध्यान देना चाहिए. लेकिन चौथा ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन है, डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस to reduce health effects from pollutant exposure. This is what should be the focus. There should be a detailed management plan that if the industry or factory is releasing certain chemicals, how to reduce the health effects due to that chemical pollutant exposure and how to manage that whole problem. What kind of hazardous waste does steel hardening process release? Steel hardening process से किस तरह के hazardous waste निकलते हैं? Brine sludge containing mercury, मतलब mercury और salt. रेसिड्यूज हैविंग लेड निकलता है. चार वेस्ट या बी, स्लज और वेट मड कंटेनिंग साइनाइड नाइट्रेट. तो द करेक्ट आंसर इज बी, स्लज और वेट मड विच कंटेन्स साइनाइड नाइट्रेट, बिकॉज हार्डनिंग ऑफ स्टील इन्वॉल्व्स nitrate and cyanide both, and I'll explain this whole process because you should know why this answer B is correct. So here, hardening is a heat treatment process carried out to increase the hardness of steel. It consists of heating steel components to the temperature within or above its critical range, held at this temperature for considerable time to ensure through thorough penetrating of heat at this temperature well inside the component and then allowed to cool quickly, which is quenching. There are processes, for example, carburizing, heating the liquid in barium cyanide or sodium cyanide. So if you heat the steel, heating the liquid barium or sodium cyanide, naturally the byproduct will be some kind of cyanide. Then cyaniding, it's a process step in steel hardening. Then carbonitriding means nitride is certainly involved, nitriding and flame hardening. So all these processes are involved in steel hardening. So naturally the waste product will be sludge or wet mud containing cyanide nitrate. Okay. Red bins in hospitals are used to dump what type of waste? And the correct answer is waste from laboratory cultures. 5. Which of the following is the most hazardous chemical in the air? Dioxins. We all know dioxins are the most hazardous chemicals in the air. Which of the following is not considered a potent toxin? इनमें से कौन सा है जो कि बहुत potent toxin मतलब खतरनाक नहीं समझा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक है, उसके इनहेलेशन से डेथ भी होती है. एसिटल्डिहाइड भी खतरनाक है और बेंजीन भी खतरनाक है. कार्बोनिक एसिड, it's a really weak acid and it doesn't really cause any significant environmental or health hazards. So carbonic acid. Question 6 answer A, question 5A, question 4A and question 3 is B. Okay, let's move forward. Which of the following is not a method adopted to dispose biomedical waste? Incineration, of course it is adopted.
for the disposal of biomedical waste. Hydroclaving, this is also adopted. Shredding after disinfection, तो पहले डिसइंफेक्ट कर दिया और फिर उसको श्रेड कर दिया, मतलब नष्ट भ्रष्ट कर दिया उसको, ये भी होता है. लैंडफिलिंग, लैंडफिलिंग इज द ओनली मेथड विच इज नॉट अडॉप्टेड टू डिस्पोज बायोमेडिकल वेस्ट, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट हैजर्डस होता है, उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है, इसलिए लैंडफिलिंग में उसको नहीं भेजा जाता है. उसको जनरली इंसिनरेशन मतलब कि हाई हीट पे उसको ऐश बना लिया जाता है, या हाइड्रोक्लेविंग करते हैं, म्यूटिलेटेड एट स्टीम के पावर से उसको, हाइड्रोक्लेविंग इज वन स्टेप अबव देन ऑटोक्लेविंग, तो वो भी करते हैं. या फिर श्रेड करते हैं, डिसइंफेक्ट करने के बाद उसको श्रेड करते हैं, तो वो भी करते हैं. सिर्फ लैंडफिलिंग नहीं करते. करेक्ट आंसर इज सी. Which type of coal has the maximum ash content? We all know that coal which has the maximum ash content is also the lowest quality. And clearly, anthracite is the best quality coal, followed by bituminous, then subbituminous, and finally lignite. So lignite is the cheapest quality coal and it has the maximum ash content. सबसे घटिया जो कोल होता है उसका एश कंटेंट सबसे ज्यादा होता है और वो होता है लिग्नाइट. अब है मैच द फॉलोइंग. येलो बैग्स, रेड बैग्स, ब्लू बैग्स, ब्लैक कार्बोय. तो जो ब्लैक कार्बोय है ये होता है इन्फेक्टेड शार्प मेटल सिरिंजेस एंड नाइफ्स, ये इसमें जाते हैं. ब्लू बैग्स में आउटडेटेड मेडिसिन के बॉटल्स जाते हैं. ठीक है, तो इन दोनों का हो गया नीचे से. रेड बैग्स में जाता है यूज कैथेटर्स. कैथेटर्स वो होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को खाली करने के काम में आता है, तो कैथेटर्स रेड बैग्स में जाते हैं. और येलो बैग्स में जाते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट प्लेसेंटा. तो ये येलो. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following power plants releases hazardous metals and radioactive materials under normal operating conditions? तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जबकि कोई एक्सीडेंट नहीं है, नॉर्मली हैजरस मेटल्स और रेडियोएक्टिव मटेरियल कौन सा पावर प्लांट रिलीज करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट नो. नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई हैजरस वेस्ट रिलीज नहीं होता है. हाइडल पावर प्लांट एब्सोल्युटली नो, यहाँ से भी कोई हैजरस वेस्ट रिलीज नहीं होता है. सोलर पावर प्लांट्स, इसके भी ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेटिंग कंडीशंस की बात कही गई यहाँ पे, सो ऑपरेशन के दौरान सोलर पावर प्लांट से भी कोई हैजरस वेस्ट जनरेट नहीं होता है. डी, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स. सरप्राइजिंगली कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज हैजरस मेटल्स एंड रेडियोएक्टिव मटेरियल्स अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस. तो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स या थर्मल प्लांट्स जो भी आप कह लें, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में वहां से हैजरस मेटल्स और रेडियोएक्टिव मटेरियल्स और हैजरस मेटल्स लाइक मर्करी, लेड, ये सब रिलीज होता है. तो आंसर होगा डी. ठीक है. क्वेश्चन 11. अकॉर्डिंग टू द हैजरस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989, व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन वेस्ट ऑयल सुटेबल फॉर रिसाइकलिंग? तो जो भी वेस्ट ऑयल है जिसको कि हम रिसाइकिल के लिए सुटेबल मानते हैं, उसमें पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का लिमिट हैजरस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989 मतलब 1989 के हिसाब से क्या है? तो यहाँ जो सबसे कम लिमिट है ना वो 6% है. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 11 का सी. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन 12. मैच द फॉलोइंग अगेन. ह्यूमन टिश्यूज को क्या करते हैं? स्कैल्पल्स को क्या करते हैं? सॉलिड प्लास्टर कास्ट्स को क्या करते हैं? कैथेटर्स को क्या करते हैं? ओके, इसको मैं आंसर देख, मुझे इसका आंसर याद नहीं है तो मैं इसको देख लूं. 12 का आंसर है ए. ए होगा, मतलब ए का 4 ह्यूमन टिश्यूज, डीप बरियल, एंड बी का 2 स्कैल्पल्स, ऑटोक्लेविंग, एंड सी का 1 सॉलिड प्लास्टर कास्ट, इंसिनरेशन, एंड डी का 3 कैथेटर्स, माइक्रोवेव म्यूटिलेशन. सो ए, दिस इज द आंसर. ए, ये आंसर है. 30. Which of the following methods is used for the conversion of decomposed solid and liquid hazardous organic waste? तो इसका आंसर होगा बी, प्लाज्मा इंसिनरेशन. बिकॉज प्लाज्मा इंसिनरेशन जो है उसमें सब कुछ एश बन जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू एश. सो हियर इट इज रिटन कन्वर्जन ऑफ डिकम्पोज्ड सॉलिड एंड लिक्विड हैजर्डस ऑर्गेनिक वेस्ट, that is handled by plasma incineration. 14. Which is corroded when the electrochemical cell is set up on a metal surface? Corrosion means eroding away, कम होना, क्षय होना. तो corrosion मतलब कौन सा चीज है जो क्षय होता है जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होता है? तो एनोड क्षय होता है, एनोड कम होता है और कैथोड बढ़ता जाता है. Which of the following methods of disposal or use of fly ash has both economic and ecological benefits?
So which of the following method of disposal of fly ash has both economic and ecological benefits? That is direct application to crop plant, never, because fly ash might have heavy metals and hazardous wastes in it. So it is not in the best interest to directly apply it to crop plant. First, you have to check it in the laboratory. The fly ash should not have exceeding concentrations of heavy metals, etc. And then only you can apply it to crop plant. So this is not the answer. Direct application, no. Converting to bricks, yes. Use as road and sub-base material, yes. तो the answer will be D, both B and C. तो क्योंकि फ्लाई ऐश को डायरेक्टली कभी भी खेत में नहीं डाला जाता है, क्योंकि फ्लाई ऐश में हेवी मेटल हो सकते हैं. तो अगर हेवी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन फ्लाई ऐश में बहुत ज्यादा है और आपने उसको खेत में डाल दिया, तब तो फसलों को नुकसान कर सकता है और फसलों में फिर बायो मैग्निफिकेशन होगा उन हेवी मेटल्स का. तो डायरेक्ट एप्लीकेशन टू क्रॉपलैंड ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है. लेकिन उसको ब्रिक्स में, ईंटों में बना लेना या उसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेना, तो इससे वो फ्लाई ऐश का डिस्पोजल भी हो गया और इकोनॉमिक भी हुआ, आपको फायदा भी हो गया पैसे से. तो इसलिए B or C correct answer. So D, both B and C. Okay. Per color coding of plastic bags for biomedical waste match the following. So यहाँ पे black bags are always meant for disposal in secure landfills. So B will be matched with 1. So we'll see here in this option A, B is matched with 1. So A, and this is the trick of solving match the following. You cannot know all the answers correctly. So if you know even one answer correctly, find out which option has that correct answer. So I know that black bags are used for disposal in secure landfills. So B will be matched with 1. That is the option A. So A will be matched with 2. Yellow bags, incineration and deep burials. B, black bags, disposal in secure landfills. C, blue or white bags, microwave treatment and destruction. And D, red bags, autoclaving and chemical treatment. Please memorize ki iska kya hota hai. Memorize this because this question might be asked in different exams and not just UGC net or set. An organization implementing environmental management system under ISO 14001 should set environmental targets in order to achieve environmental objectives within a specified time frame. The target should be okay. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने environment management system ISO 14001 के हिसाब से रखा है. उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए हैं, उस टारगेट को अचीव करना है एक विद इन एक टाइम फ्रेम में. तो किस तरह का टारगेट सेट करना चाहिए? इम्प्लीमेंटेड ऑन अ ट्रायल बेसिस? नो. जब उसको एक टाइम फ्रेम में अचीव करना है तो ट्रायल क्यों करेगा? जेनेरिक इन नेचर? नो. टारगेट शुड नेवर बी जेनेरिक इन नेचर. टारगेट शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक इन नेचर. Related to financial aspects? No, because it's ISO 14001, so it's not just related to financial aspects. It is related to environmental and other aspects too. D, measurable and specific. That's what I said. It should be specific and measurable. इसको quantify किया जा सके ताकि आपको पता चले कि आपका टारगेट कब और कैसे अचीव हो रहा है या हो भी रहा है कि नहीं. तो measurable होना चाहिए जिसको आप माप सकें, क्वांटिफाई कर सकें, और स्पेसिफिक होना चाहिए कि खास तौर से बताया जाना चाहिए कि ये टारगेट अचीव करना है. Question 18. ISO 14001 requires an organization to set improvement targets for every department, define a quality policy within the defined scope of its environment management system, define the scope of its environment management system, or define the scope of its audit. तो सही उत्तर है C, 18 का, define the scope of its environment management system. That is all. वो ISO 14001 requires an organization to define the scope of its environment management system. की environment management system आप किस तरह का लगा रहे हैं उसका स्कोप डिफाइन करना जरूरी है. तो ये ISO 14001 का काम है. Cost benefit analysis in an EIA process. Cost benefit analysis in an EIA process is performed during design phase, feasibility study phase, implementation phase और maintenance phase. तो implementation और maintenance phase के दौरान cost benefit analysis नहीं किया जाता है क्योंकि वो पहले ही कर लिया जाता है, तभी हम उसको करेंगे. और वो होता है जनरली feasibility phase में कि एक जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसको हम कॉस्ट और बेनिफिट देखेंगे, इतनी लागत पे इतना फायदा हमें हुआ, और अगर वो फायदा फीजिबल है, वो फायदा सब्सटैंशियल है, तो ही हम वो प्रोजेक्ट लगाएंगे. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एन EIA प्रोसेस इज परफॉर्म ड्यूरिंग feasibility study phase so that it tells us if this project is financially feasible or not. Match the following auditing types with their respective action. तो इसका आंसर है 20 का A,
एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि 20 का ए क्या है। 20 का ए ये है, ए का है 2, इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट इज इनिशियल एक्टिविटीज। देन B3, predictive techniques audit is validation of impacts. C, performance audit is for comprehensive operational activities, and procedures audit is external review. So we all know, you can solve this question really easily. We all know about performance audit, right? It's a comprehensive operational activities, like how everything is performing. So you always do a comprehensive audit of operational activities, like how your operations are performing, right? So C has to be matched with 4. So this is the correct option because C is matched with 4 in option A. And then you can match the other options accordingly. ठीक है, तो जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि जब भी मैच द फॉलोइंग होता है तो जो आपको सबसे सही आंसर पता है उसको आप देखिए। तो अगर मुझे पता था परफॉर्मेंस